So in the last class, we were doing application of Bernoulli's theorem, and today we will be doing, Torricelli's formulas uh, for velocity of efflux and after that viscosity. Okay. So Torricelli's law. This again is a application of Bernoulli's theorem only. So Torricelli law and velocity of efflux. Suppose that a liquid is taken in a container having a large cross-sectional area. So let's say the container has a large cross-sectional area A here. Okay. Okay, it is the cross-sectional area is A1, sorry. Having an orifice of cross-sectional area A2. So there is an orifice. Orifice means small hole is present whose cross-sectional area is A2 on the wall of the container at a depth h. And this orifice is present at the depth h from the top, from the free surface of the liquid. Suppose the velocity of efflux of liquid out of the container is V2. So the liquid which is coming out here, let's say the velocity here is V2, which is known as velocity of efflux. The velocity of liquid particle at the surface at that instant, and the surface which is going down, let's say the velocity here is V1. Okay, velocity is V1 here. So let atmospheric pressure be P naught. From the principle of continuity, we get A1 V1 is equal to A2 V2. So, principle of continuity says that whatever flow of liquid is here, the same flow of liquid will be outside. So A1 V1, A1 into V1 is equal to A2 into V2. This is principle of continuity. Now applying Bernoulli's principle at the free and outside the hole and also at the surface. So we take 2 points, one A and other at B. So A पे हम लोग total energy लिखेंगे और B पे total energy लिखेंगे. So when you write total energy at A, let's say the pressure here is P0, atmospheric pressure. P0 plus half rho V1 square plus rho GH. Okay. We are considering this as a reference line. Okay. So because this is reference line, so all height is measured from here. So P0 plus half rho V1 square plus rho GH. Ab B pe, when we write the total energy at B, this is P0 because the pressure again outside is same as atmospheric pressure P0 plus half rho V2 square. V2 is the velocity of efflux plus of rho G into 0, right? So this whole thing becomes equal to 0. So now when you solve this, you will have, see, P0 and P0 gets cancelled. P0 and P0 gets cancelled. Now what we have is half rho V1 square plus rho GH is equal to half rho V2 square. Okay. Now, see, rho gets cancelled again. Multiply by 2, we get V1 square plus 2GH is equal to V2 square. Now V2 square is equal to V1 square. V1 can be written as V1 is equal to A2 V2 upon A1. A2 V2 upon A1. So V1 square will be written as A2 V2 by A1 whole square plus of 2GH. Now bring V2 square wala term on the left side only. You will get V2 square common 1 minus A2 square by A1 square is equal to 2GH, or V2 square is equal to 2GH divided by 1 minus A2 square by A1 square. So which is, this term which is written here. Is it clear? Yes, sir. Now, if the surface area of the tank is large compared to the hole, so if A1 is very, very large than A2, surface area of the tank is very large as compared to the hole. In that case, since A1 is very large as compared to A2, this whole thing A2 by A1 becomes equal to 0.
So what will happen? A2 by A1 is very, very less than 1, right? Now, since it is very, very less than 1, so we can ignore this. A2 square by A1 square is very, very less than 1. And because it is very, very less than 1, V2 square will become 2GH. Why? Because this whole quantity will be ignored, right? Because it is very small, we will assume it to be 0. V2 square will become equal to 2GH and V2 is equal to root under 2GH. तो ये सी दिस इज सेम. अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ही रिलीज कर देते, फ्री फॉल होता, तो velocity v2 would have been root under 2gh. That is what we know. If an object falls by a distance height, by a height h, so when it falls down by a height h, the velocity which it acquires is equal to root under 2gh in case of free fall. Same thing is happening here also. This is similar to, an object having a free fall. Okay. So if v2 is equal to v, then we say that v is equal to root under 2gh. सर, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि एक कैपिलरी है, वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसमें पानी भरा हुआ है 8 या 10 सेंटीमीटर के आसपास। तो अगर वो फ्री फॉल हुआ लिफ्ट का, मतलब अगर उसको इस अपरेटस को लिफ्ट में रख दिया जाए और फ्री फॉल हो तो सर हाइट तो उसकी 20 सेंटीमीटर होगी, लेकिन क्यों होगी ये मुझे नहीं समझ में आया। क्या क्या चीज फिर से बताओ. एक कैपिलरी है. एक कैपिलरी है, उसका हाइट इज 20 सेंटीमीटर ठीक है. और उसमें पानी भरा गया है 8 या 10 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है. और अब उस apparatus को एक लिफ्ट में डाल दिया गया है और वो फ्री फॉल कर रहा है। हम्म. तो सर उसमें लिखा हुआ था कि 20 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा पानी फ्री फॉल के टाइम, मगर क्यों करेगा ये, कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। Because free fall हुआ तो this whole thing, the water which is here, this water will basically, हम लोग अभी कैपिलरिटी करेंगे ना, तो उसमें वो चीज करेंगे भी. तो अब अगर ये जो है 8 सेंटीमीटर इसका फ्री फॉल हो रहा है, तो इसका अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम इस वाटर वाले पोर्शन का बताओगे, तो वेट होता है बस एक, राइट, और नॉर्मल रिएक्शन होता है. बट जब फ्री फॉल होगा, तो देर विल बी अ स्यूडो फोर्स ऑल्सो विच विल बी इक्वल टू mg, राइट. तो mg कैंसिल हो गया, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन वो जीरो हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, तो ये सरफेस से लीव करके ये टॉप पे पहुंच जाएगा बेसिकली. तो ओके इसीलिए सर। पूरा ये 20 सेंटीमीटर फेल हो जाता है. वैसे कैपिलैरिटी करेंगे तो तुम एक बार क्वेश्चन भी भेज देना, मैं देख लूंगा कि वो किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा है. बट हाँ, ये ये तो एक नॉर्मल चीज है. अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना लिफ्ट में और वो फ्री फॉल हो रहा होता है, तो वो सरफेस छोड़ देगा अगर ये फ्री फॉल हो रहा होगा इसका सरफेस का. और अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाता है, तो ऊपर जाके चिपक जाता है. ठीक है. एक सर बार क्वेश्चन भी मुझे भेज देना, कहाँ पे क्वेश्चन है, क्या लिख. ठीक है. हाँ सर, और एक और था वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक.
ना तुमने स्मृति टेस्ट नहीं दिया है ना अभी एक भी, वो जो फुल लेंथ वाला हो रहा है? हाँ सर, वो दोनों मेरे स्किप हो गए थे उसी दिन, मेरा एग्जाम मतलब नेक्स्ट डे था, अब तो खत्म अब हो मैं गया? उनको दूंगी। अब पेपर खत्म हो गया? हाँ सर, अभी जस्ट कल खत्म हुआ था, तो आज सुबह असाइनमेंट करके मैंने क्लास ज्वाइन किया। हाँ, अभी पढ़ वढ़ लो आराम से, और उसके बाद थोड़ा मतलब 2-3 दिन बाद भी दे सकते हो, नॉट एन इशू। बट टेक इट, क्योंकि अन्वेषा ने 2 टेस्ट दिया है, दोनों में उसका अच्छा है, एक 212 है, एक 202 है, मतलब 200 प्लस है। सो 200 प्लस मीन्स 99.5 परसेंटाइल से ऊपर। सो आई वांट यू टू बी इन दैट लीग, प्लीज उसको टेस्ट दो, क्योंकि 5 टेस्ट है ना? तो और 21 से एग्जाम भी है, 21 23 से एग्जाम है, 23rd या 21st से है? सर 22 है, लेकिन अभी किसी की भी डेट नहीं आई है। अच्छा अच्छा। नहीं, वो तो एग्जाम होगा, क्योंकि केवीपीवाई कल हुआ था 31st को, उसी सेंटर पे जिस पे तुम्हारा होगा ना आईआईटी, तो उसी सेंटर पे केवीपीवाई का एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम विल बी देयर। तुम बस थोड़ा वही है, अच्छे से कर लो, तुम्हारा अच्छा आ जाएगा, है ना? बस घबराना नहीं है, और अपने आप पे भरोसा रखना है कि हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो आगे करते हैं। टाइम इन विच लिक्विड हिट्स द ग्राउंड। अब हम लोग ये निकाल रहे हैं कि कितने टाइम में ये लिक्विड नीचे आ जाएगा। तो अब जो जो डिस्टेंस इसको आना है, अगर मैं फिर से यहाँ पे फिगर बना दूँ, यहाँ पे बना ही हुआ है वैसे तो। सो ये देखो H-H, सॉरी यहाँ पे ये दूसरा बना, हम लोग का जो फिगर है उसमें डेप्थ H है, यहाँ पे ऑरिफिस है, ये स्मॉल h है, टोटल हाइट कैपिटल H है, तो ये जो डिस्टेंस होगा H-H होगा। तो लिक्विड जो आता है, मान लो ये जो यहाँ पर से निकला V2 स्पीड से, ये यहाँ पे आके ऐसे गिरेगा, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड 0 है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगा दो, तो वाई डायरेक्शन में ए वाई इज इक्वल टू जी हो जाएगा, राइट? तो एस वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस वाई क्या है, एच माइनस एच है, वाई डिस्टेंस जो मूव कर रहा है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, एच माइनस एच, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर. So when you take 2 on the other side, this becomes twice of h minus h divided by g is equal to t square. So t is equal to root under twice of h minus h divided by g. So this is the time taken in which liquid hits the ground. अब रेंज निकालने बोलेगा, तो जितने टाइम में लिक्विड इज कमिंग डाउन, v2 इंटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vx इज इक्वल टू v2, एंड डिस्टेंस दिस रेंज r विल बी इक्वल टू v2 टाइम वेलोसिटी इंटू टाइम. वेलोसिटी v2 is given as root under 2gh abhi in the first one which we proved, and time we'll put this. So g and g, root g gets cancelled, 2 2 4 हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर आके ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ h माइनस h इंटू h is your range. So if this distance is, let's say, 2 meter, and this distance is 3 meter, so see, twice of 3 into 2, root under 3 into 2, this is the range. This is how you can remember. So range formula, this is important. It comes in exams, it comes in exam, not the formula, but yeah, when it comes you can directly use. और तुमको ध्यान में ये रखना है कि twice of root under what, this distance into this distance, h into h minus h. Is it clear? Now यस सर। fourth one, for conditions for maximum range. So this range x will be maximum if dx by dh is equal to 0. To maximize anything, we find the differential and then equate it to 0. So when you differentiate, so what you will get is, see here x is equal to twice of root under h minus h into h. X square will be equal to 4h into h minus h. Differentiating with respect to x, we get 2x dx by dh. So if we differentiate on both the sides, we will get 4h minus 8h. So this is basically 4hh minus 4h square. If you differentiate it with respect to small h, this will become 4h minus 8h. 4h minus 8h. When you equate it to 0, you will get small h is equal to 4h by 8 or h by 2.
So when the orifice is exactly at the midpoint, the distance from the top and bottom, when it is equal, then in that case the range is maximum. So range is maximum when orifice is at a height h by 2, total height का half पे जब orifice होता है, then you get the maximum range. Is it clear? Fifth one, x is given as twice of h minus h into h. This is the range. X will be maximum when h is equal to h by 2, and maximum range in that case, if you put small h is equal to h by 2 in this equation, right? So what you will get is twice of h by 2 into h minus h by 2. So this is equal to twice of root under h by 2 into h by 2. So this is capital H. So maximum range is equal to capital H. Maximum range occurs when depth is half of the total height of the the container in which liquid is filled, and maximum range is equal to height of the container, height till which the liquid is being filled. Range for orifice at depth h below the top surface is, so if we are to find the range, this is already which we have calculated, this and this is same. For orifice at height h above the bottom of the surface is also given by r dash only. Means तुम नीचे से मतलब ऊपर से डेप्थ h लेके जाओ या नीचे से हाइट h लेके जाओ, दोनों केस में रेंज सेम आता है. Is it clear? See, h minus h gets replaced by small h and small h gets replaced by h minus h. So even if you are calculating, the range for an orifice which is at a height small h from the bottom or at a depth small h from the top, in both the cases the range will be same. R is equal to r dash is equal to twice of root under h minus h into small h. Is it clear, everyone? Yes, sir. So this is what is written here as well. So here, if you take if you take orifice at height edge or depth edge, in both the cases, this orifice and this orifice both will have same range and maximum range when height is equal to h by 2. When depth is equal to h by 2, in that case maximum range, and that maximum range is equal to capital H. These all things, when you remember, it becomes very easy for you to do these questions. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now time for emptying the container. So if A naught is the area of orifice, so here area of orifice is A naught, let's say, at depth y. So this orifice is at a depth y below the free surface, and A is that of the container. A is the area of the surface of liquid. The volume of the liquid coming out of the orifice per second will be dV by dt is equal to A naught into, let's say, velocity of the liquid coming out is V, so A naught into V, right? See, AV जो equation of continuity लिखते हैं, A1 V1 is A2 V2. This is nothing but volume of liquid which is coming out per second here and coming out per second at another place. So when I say that we have to calculate the volume of the liquid coming out of the orifice per second, that will be area of the orifice, area of cross section of the orifice into velocity of liquid which is coming out of it. So that is A naught into V. So A naught into velocity which is coming out, we already know is equal to root under 2gy, right? Here the depth is y, so we'll use root under 2gy. So A naught into root under 2gy, as V is equal to root 2gy. Due to this, the level of liquid in the container will decrease, and so if the level of liquid in the container above the hole changes from y to y minus delta y, now this will, let's say, decrease
by amount dy, then level of liquid will become from the top, the height of this, the depth of this orifice now is equal to y minus dy. That is what is written in time t to t plus delta t. Then the volume of liquid which is coming out is equal to a into dy. Volume of liquid which is coming out is area of cross section into length of the liquid which has fallen down dy. So this is the volume which has come out. So minus dv is a dy. Minus dv क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है, right? Less हो रहा है volume. So this will become now by so substituting this value of dv in the above equation. So we know that dv by dt is a naught root under 2 gy. Put the value of dv as a dy. So this will become minus a dy by dt is equal to a naught root under 2 gy. Okay. So integrating on both the sides, we get dt is equal to a by a naught 1 by root under 2 gy raised to the power minus 1 by 2 dy. So the time taken for the level to fall from h to h dash, right? From h to h dash will be minus a by a naught 1 by root under 2 g y raised to the power minus 1 by 2 dy h to h dash. So see, when you integrate y raised to the power minus 1 by 2 dy, so this will become y raised to the power minus 1 by 2 plus 1 and minus 1 by 2 plus 1. So this is 2 root under y. So that is what? 2 root under y means 2 root under, and the upper limit and lower limit is h and h dash, right? So and negative sign is outside. So if you do it, this will be 2 root under upper limit h dash minus root under h. Now if you, since there is a negative sign outside, this term will change. So it will become 2 root under h minus root under h minus h dash. Okay. So if the hole at the bottom of the tank, if the hole is at the bottom of the tank, then time taken will be equal to, see, h dash will become 0 in this case. So a by a naught root under 2h by g. This is the total time taken for the container to be empty. So you can remember the formula here again. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Now 50th one, a small hole is made at a height h dash which is equal to 1 by root 2 meter from the bottom. So see, from the bottom, this height is h dash. This height will be equal to h dash. This is 1 by root 2 meter. From the bottom of a cylindrical tank and a depth at a tank and at a depth of h is equal to root 2 meter from the upper level of water. H is equal to root 2 meter. From the upper level of the water in the tank, the distance where the water emerging from the hole strikes the ground, हमें ये निकालना है कितने डिस्टेंस पे ये वाटर स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, हमें पता है the velocity of efflux v is equal to root under 2gh. h क्या है? root 2 है, तो root under 2gh into root 2. ओके, या वैल्यू बाद में ही पुट कर लेंगे, रूट अंडर 2gh ही रखते हैं, राइट. नाउ रेंज r is equal to v into time t. So this is root under 2gh into time t. अच्छा, and this height h dash, see,
we know that Sy is equal to Uyt plus half Ayt square. Sy is h dash, Uy is 0. है ना? In y direction the velocity is 0 here. So half into g into t square. So 2h dash by g is equal to t square. So t will be equal to root under 2h dash by g. So once you have got the value of t, the range r will be equal to root under 2gh into root under 2h dash by g. So g cancel हो गया, 2 बाहर कर रो, रूट अंडर h इंटू h डैश. तो ये फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें बोला भी था कि याद कर लेने के लिए, नीचे से हाइट और ऊपर से हाइट दिया हुआ, अगर याद है फॉर्मूला तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं. r इज इक्वल टू रूट अंडर रूट अंडर h इंटू एच डैश. h है हमारा √2, h डैश है 1/√2, तो ये क्या हो गया 2 मीटर हो गया. तो अगर तुमको ये फॉर्मूला याद था, है ना, जो कि हम लोगों ने अभी पीछे किया था कि रेंज इज गिवन बाय √2 रूट अंडर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, है ना. हम लोगों ने देखा था कि रेंज r इज इक्वल टू 2 रूट अंडर h माइनस h इंटू. एक्सक्यूज मी सर. यस सर मुझे इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन याद आया ग्रेविटेशन का. सर वो क्वेश्चन जो आप पूछते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमने एक बॉडी को वो प्रोजेक्ट कर दी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने एक बॉडी को v दी है, तो उसकी आप हाइट बताइए, वो मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकता है. तो हम वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले मेथड से करते हैं. हाँ, एक आपने सर फॉर्मूला बताया था h इक्वल्स टू v स्क्वायर r अपॉन 2gr माइनस v स्क्वायर. वो तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ बेसिकली अगर हम ग्रेविटेशन में जाते हैं व्हेन h इज लार्जर देन r, मतलब दिस इज नॉट, मतलब इफ h इज नॉट वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, तब वो जो फॉर्मूला है तब हम लोग अप्लाई करते मतलब h बहुत हैं. छोटा हो जब. हाँ नहीं, h बहुत छोटा होगा तब तो सिंपली यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे जो हम लोग कोई भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, है ना, हम लोग इस स्पीड से फेंकते हैं, क्या हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh करके v स्क्वायर इज इक्वल टू t2gh, तो h क्या हो गया v स्क्वायर बाई 2g हो गया, राइट. ये तब करते हैं व्हेन हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ. अगर ये कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ होता है तो जो तुम फॉर्मूला अभी बता रहे हो ग्रेविटेशन वाला gm स्क्वायर, जो भी तुम बोल रहे थे ना, हमको याद नहीं है फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला यूज कर. ओके सर. ठीक है. तो जब ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन है ना, तुमको मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये सब के टर्म्स में दे रखा है, तो समझ जाओ कि वो उसमें ये वाला चीज अप्लाई नहीं कर रहे हैं. ये काइनेमेटिक्स वाली चीज हो गई जो कि हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं. यस सर. ठीक है. ये क्वेश्चन आ गया समझ? यस सर. Now there are two identical small holes, cross-sectional area small a, on opposite side of tank containing a liquid density rho. तो हमारे पास एक टैंक है, इसके दो ऑपोजिट साइड में दो होल्स हैं. द टैंक इज ओपन एट द टॉप, द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द टू होल्स इज h. मतलब यहाँ पे एक होल है, दूसरा होल यहाँ पे है, और इन दोनों होल्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ हाइट है ये स्मॉल h. और वाटर लेट से इस कंटेनर में पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, और ये जो होल्स हैं, इन दोनों होल्स के बीच में जो डिफरेंस इन हाइट है दैट इज इक्वल टू स्मॉल h. As the liquid comes out of the two holes, find the net horizontal force the tank will experience. इसमें से जो लिक्विड आएगा बाहर और इसमें से जो लिक्विड आएगा, इसके वजह से नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है वो हम लोग को निकालना है. ठीक है. सो
अब देखो यहाँ पर से जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विच इज कमिंग आउट, let's say this is v2 and the velocity of liquid which is coming out here is v1, right? यहाँ से जो इसका डेप्थ है, let's say x डेप्थ है, let us assume density of the liquid is rho, cross sectional area in at both the places is small a. Now v1 will be equal to velocity of efflux, v1 is equal to root under 2g into h plus x, and velocity of efflux v2 is equal to root under 2g into x. Now volume of liquid coming out per second will be equal to A into V, and V is the velocity. So volume of liquid coming out per second is A into V. Mass of liquid coming out per second will be equal to AV into rho, है ना, where V is the velocity, है ना. अभी हम लोग ये नहीं देख रहे कि किस में से, किसी भी होल जिससे वेलोसिटी V से बाहर निकल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो volume of liquid which is coming out per second is A into V, and mass of the liquid which is coming out per second is A into V into rho. Now momentum of liquid discharge per second is equal to A into V into rho, mass into velocity. So AV square into rho हो गया मोमेंटम पर सेकेंड. मोमेंटम पर सेकेंड क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू force exerted on the container due to this discharge of liquid is equal to AV square rho. ठीक है. अब यहाँ पे जो फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, इस पे जो लगेगा, ठीक है. सो नेट फोर्स ऑन द टैंक भाई ये इधर आएगा तो इसमें जो रिक्वाइल फोर्स इस तरफ लगेगा, इसमें से जो लिक्विड निकलेगा उससे रिक्वाइल फोर्स इधर निकलेगा. तो नेट फोर्स ऑन द टैंक इज, जो V1 से जो लिक्विड निकल रहा है उसके वजह से जो रिक्वाइल हो रहा है A V1 स्क्वायर रो, और V2 से जो ऊपर वाले होल से जो निकल रहा है उसके वजह से जो रिक्वाइल हो रहा है A V2 स्क्वायर रो. नेट फोर्स ऑन द टैंक इज दिस, राइट. सो दिस इज इक्वल टू A rho V1 square minus V2 square. So this will be equal to A rho V1 square क्या है? V1 is equal to root under 2g h plus x हो गया. So this is V1 square will be 2g h plus x minus of V2 square is equal to 2gx. So if you calculate this, this will become A rho 2gh plus 2gx minus 2gx. So A rho into 2gh plus 2gx minus 2gx plus 2gx minus 2gx cancels. So A rho into 2gh will give you the net force. Is it clear? Yes, sir. This is again a very important concept. The question based on this application is being asked. तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो बेसिक एप्लीकेशन वाले करते हैं.
इनके आगे की चीजें भी पूछी जा सकती है, मतलब किसी भी क्वेश्चंस में। लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप करके बताइए मुझे। ये बॉटम नहीं है, टॉप है। आया नहीं? See, in this question, a long cylindrical tank of cross-sectional area 0.5 meter square is filled with water. It has an opening at a height 50 centimeter from the top. ठीक ही था। It has an opening at a depth, कर लो फिर। $50 centimeter. So long cylindrical tank of cross sectional area, तो यहाँ पे जो एरिया है A1 is equal to 0.5 meter square is filled with water. It has an opening at a depth of 50 centimeter from the top, having an area of cross section 1 into 10 to the power 4.
सो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस इज 1 into 10 to the power -4 meter square. A movable piston of cross sectional area almost equal to 0.5 meter square is fitted at the top. यहाँ पे piston है, उसका एरिया जो है टॉप के एरिया के बराबर ही है. Such that it can slide in the tank. A load of 20 kg is applied on top of the water by piston as shown in the figure. Find the speed of efflux. तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा that will be atmospheric pressure. So pressure on top, ठीक है, P1 is equal to P0 plus force upon area. तो P0 is 1 into 10 to the power 5 है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दिस इज 1 into 10 to the power 5. ठीक है, और इसको रहने ही दो. P0 plus F by A. तो फोर्स हमारा यहाँ पे कितना है, mg के बराबर होगा. सो g का वैल्यू अगर हम लोग 9.8 ले लेते, सॉरी 10 ले लेते हैं, सो दिस इज mg by A. और P0 plus mass is 20 kg. 20 into 10 divided by area of cross section is 0.5. So this is P naught plus 200 by 0.5, that is 400. ठीक है, ये प्रेशर P1 हो गया. अब बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. सो बर्नौलीज थ्योरम अगर हम लोग लगाते हैं तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ऑफ रो GH इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ही होगा P2. तो दैट इज P0 प्लस रो इंटू G इंटू 0 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर. Now see, since this area is very less as compared to this, the velocity here will be very large as compared to this. So तुम लिखोगे since देखो ये A1 V1 is equal to A2 V2 करते हैं. So जो V2 है this is A1 by A2 into V1. ठीक है. So V2 by V1 is equal to A1 by A2. A1 0.5 है, A2 1 into 10 to the power -4 है. So this will become 0.5 into 10 to the power 4. So that is V2 is very greater than V1. तो V1 को ऑलमोस्ट तुम 0 मान लोगे तो ये 0 हो गया. P1 is equal to P0 plus 400 plus rho GH is equal to P0 plus half rho V2 square. P0 कैंसिल हो गया. तो अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं. सो 400 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg per meter cube into 10 into depth h is 50 centimeter, that is 0.5 half into 1000 into V2 square. So 10,000 into 0.5, 5,000 into 4 plus 400, 5,400 divided by 500 is equal to V2 square. So 54 divided by 5, 10.8 is V2 square. So V2 is equal to root under 10.8. So this is equal to 3.28 meter per second. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir.
लिख लो फटाफट। अब ये एक्सटेंशन के थे। हाँ जी बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। Now viscosity, the property of liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layer is known as viscosity. तो liquid layer by layer move करता है और हर layer के बीच में there will be some friction, and this fluid friction is basically known as viscosity. So one layer of liquid, when it moves over the other layer of liquid, there is some amount of ठीक है, so there is some amount of friction between two layers of the liquid, and then that friction is known as viscosity. So the property of the liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layer is known as viscosity. Internal tangential force which tries to retard the relative motion between the layers is called viscous force. Okay. So internal tangential force which tries to retard the relative motion between the layers is called viscous force. Viscosity comes into play only when there is a relative motion between the layers of the same material. One can say that it is the fluid friction or internal friction. So fluid friction is also known as, viscosity is also known as fluid friction. Now cause of viscosity, consider a liquid moving steadily over a fixed horizontal surface. It is observed that liquid moves in form of various layers parallel to horizontal surface. Lowest layer that is in contact with the fixed surface is at rest, and the velocity of successive layers increase uniformly upward. So, the surface, the layer which is in contact with the fixed surface, which is not moving, that layer will be at rest. And as you move inside, the velocity of the layers of the liquid will keep on increasing. Consider any two adjacent layers A and B. Speed of layer A is more than layer B. So it tends to drag layer B along it, and layer B tends to retard the motion of the layer A sliding over it. So A will see, we are considering two layers A and B. So A will try to drag B, and B will try to retard the motion of layer A. Now, as a result, a tangential force F between the layers come into play. So there is a tangential force which comes into play. This tangential force which opposes the relative motion between the two layers of liquid is called viscous drag or viscous force. Newton's law of viscosity, as shown in the figure, consider two layers PQ and RS. So let us consider two layers. अभी अगले पेज में हम लोग देखेंगे. Two layers have been considered. One is PQ and RS of the liquid at distance x and x plus dx from the fixed surface AB, having the velocities v and v plus dv respectively. Let A be the area of layers in contact. Here dv by dx will become the velocity gradient. So let's say we have one layer PQ, okay, and there is this another layer RS, right? So PQ and RS, these are the two layers, okay. Now, let's say PQ, this lower layer is moving with speed v and the upper layer is moving with speed v plus dv. The distance between these two layers is dx, right? And x is the distance from this. X is the distance of the lower layer from the fixed bottom, which is at rest. So according to Newton's law of viscosity, the tangential viscous force F acting between the layers, F is first proportional to the area of cross section, and second it is proportional to the velocity gradient. If we combine both of this, we know that the force, viscous force, is proportional to area of the layer into dv by dx. If we replace this proportionality sign by equality sign, we get
a constant of proportionality, which is known as coefficient of viscosity. So F is equal to minus of eta A dV by dx. In equation, F is equal to minus eta A dV by dx. If A is 1, dV by dx is 1, force will be equal to eta. So hence coefficient of viscosity of a liquid is defined as the viscous force per unit area of contact between two layers having a unit velocity gradient. Dimension of eta, right? So dimension of eta is m1 L minus 1 T minus 1. SI unit of viscosity eta is Poissels. Okay. Now CGS unit of viscosity eta is Poise, dyne second per centimeter square. Relation between Poisel and Poise, if you find, is 1. So 10 Poise is 1 decapoise, and so 1 Poisel basically is equal to 10 Poise, and 10 Poise is equal to 1 decapoise. So this is the relation between Poisel and Poise. Dependency of viscosity of liquid on temperature of fluid. Viscosity of a liquid is due to cohesive force. So since cohesive force decrease with increase in temperature, therefore the rise in temperature, the viscosity of liquid, therefore with the rise in temperature, the viscosity of liquid decreases. So Stolt's empirical formula, this is not very important. You don't have to remember this. You just need to know with temperature, the viscosity of the liquid decreases with increase in temperature. Now the viscosity of the gas is the result of diffusion of gas molecules from one moving layer to the other moving layer. Now with increase in temperature, the rate of diffusion increases. So the viscosity also increases. Thus the viscosity of gases increase with rise of temperature. So viscosity also increases, viscosity of gases also increase with rise in temperature, and viscosity of liquid also rises with increase in temperature. Sorry, viscosity decreases with increase in temperature. So this is just opposite. Here viscosity is decreasing with respect to temperature with increase in temperature, and in gases viscosity increases with rise of temperature. On pressure of fluid, so except water, viscosity of liquid increase with increase of pressure. In case of water, viscosity decreases with increase in pressure for first few hundred atmosphere of pressure. The viscosity of gases is practically independent of pressure. On nature of fluid, viscosity depends upon nature of fluid. Its value is different for different fluid. So that's what is being measured by coefficient of viscosity. If you see this 55th example, a metal plate 0.04 meters square in area is lying on a liquid layer of thickness 10 to the power minus 3 meter, and coefficient of viscosity is 140 poise. Calculate the horizontal force needed to move the plate with a speed of 0.040 meter per second. So मेटल प्लेट का जो एरिया है A इज इक्वल टू 0.04 मीटर स्क्वायर हो गया. थिकनेस जो मेटल प्लेट का डेल्टा एक्स इज 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. So metal plate, okay, is lying on a liquid layer. Okay, there is a liquid layer. So जो ये liquid layer है, this liquid layer का जो thickness है, that is 10 to the power minus 3 meter, and coefficient of viscosity eta is equal to 140 poise. So अब ये we know that poise is basically the CGS unit, okay, and we have to we know that
1 poisal is 10 poise. So अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ये SI यूनिट में, तो eta is equal to, we'll write it as 14 poisal, right? So that is the SI unit, and poisal इसको हम लोग PAS भी लिख सकते हैं, या 14 kg per meter per second, राइट? सो ये हमारा coefficient of viscosity का वैल्यू हो गया. Now velocity gradient delta V by delta x is equal to 0. See, ये जो बॉटम होगा वो तो रेस्ट पे है, तो यहाँ पे जो डेल्टा वी है टॉप का, जो ये होगा डेल्टा वी 0.04 हो गया. वेलोसिटी यहाँ से और यहाँ के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है, दैट इज 0.04. डेल्टा एक्स इज गिवन बाय 10 to the power -3. So this is 40 per second. This is your velocity gradient. Coefficient of viscosity eta is 14 kg per meter per second. So F जो फोर्स है, ये हम लोगों ने निकाला था, F is equal to minus eta A dV by dx. So which is same as minus eta A delta V by delta x. So this is minus of eta A. So जितना ये विस्कस फोर्स है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा. तो जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स. तो फोर्स विल बी ऑपोजिट टू विस्कस फोर्स, तो साइन पॉजिटिव ले लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे हम लोग ये फोर्स. So eta is 14, area is 0.04 into dV by dx is equal to 40. So this is 0.416, 14 into 1.6, 22.4 meter. So this is 22.4 meter. सर वो 224 न्यूटन होगा, वो 140 पॉइस है. 140 पॉइस को हम लोग पॉइजल में कन्वर्ट कर लिया ना. ये पॉइस जो है CGS यूनिट होता है, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे. 1 poisal is equal to 10 poise. ओके सर. ठीक है, तो उसको कन्वर्ट किया, और वो जो SI यूनिट में मतलब दैट इज kg per meter per second, तो उसको 14 kg per meter per second में कन्वर्ट करके उसके बाद यूज किया. सो चलो विल स्टॉप हियर फॉर द डे, है ना. इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, लिख लिया सबने इसको? यस सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी.